you don't want to just hear your low end. In the podcast you want to, because there's no other music around. Right? Okay. Right. So but like on the other hand, like if you're dealing with a song that is happening, you want to listen to the low end, you want to listen to the low mids. तो तुम्हारे low mids important नहीं है. क्या चल रहा है फिर? क्या पॉडकास्ट की क्या वाइब रख रहे हैं हम अब? सो पॉडकास्ट इज़ वन ऑफ द वेज आई फील लाइक कि इंडिया में ऐसे कुछ हिंदी में और इंग्लिश में कोई पॉडकास्ट नहीं है जो एक्सप्लेन कर रहा हो कि म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में मिक्सिंग क्या कर रहे हैं हम लोग. इट्स जस्ट लाइक अगर कोई मिलने आता है हम लोग को स्टूडियो में तो दे जस्ट कनेक्ट सो वेल. एग्जैक्टली. वो एक इन पर्सन मिलने वाली वाइब भी अलग होती है, तो वो हम एमुलेट कर सकते हैं पॉडकास्ट के थ्रू. एग्जैक्टली. कि इट्स जस्ट लाइक यू आर सिटिंग हियर एंड Exactly, सीइंग अस डिस्कस, या फिर जनरली जो हम बात करते रहते हैं, जैसे वही वाली चीज़ हो गई कि हम अगर किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो जब तक उसकी रील बनती है तब तक वो बहुत फिल्टर्स के थ्रू पास हो चुका होता है. बट जब वो रॉ आइडिया होता है तब जब हम उसे क्लिक करता है वो हमें, तब हम बोलते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है. और अगर उसी फॉर्म में हम किसी को प्रेजेंट कर पाएँ और वो उसको एक्सेप्ट कर पाए उस आइडिया को, तो वो प्रोसेस बच जाता है उसका भी. अब किसी को रील देखने तो देख लो, वो तो दूसरी बात है. बट आई थिंक दिस इज़ अ मोर like easy to understand and a more informal, fun way to understand new concepts. That was the thing. Like I mean, why did we start making these kind of reels? हमें क्यों बना रहे थे? क्योंकि I taught for some time and while teaching I used to use these kind of methods कि बहुत ही easily कोई समझ जाए कि क्या कर रहे हैं हम लोग आज के टॉपिक में. Exactly. Yeah. So like that other day I was speaking with this guy, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि म्यूजिक थ्योरी एक्चुअली में क्यों चाहिए हम लोग को. Like so I mean of course these topics are really simple, but at the other end they're so important for someone to really dive into it. Like it's not just beginners on our channel, right? Like there are intermediate producers, there are a lot of really talented guys that are following us. पूरे spectrum of producers है अपने channel. So podcast I feel is really important in that sense that like लोग हमसे connect कर पाएं. And of course we are not like the experts, but we are talking about these things. That's the one major thing because no one is doing that. Yeah, so it's fun, right? Exactly. मज़े ही है. Exactly. And like if we take out like half an hour, 1 hour, it takes more definitely to set this shit up. but we'll get used to it. I think अभी तो जैसे आज हमें काफ़ी टाइम लग गया यार, 1.5-2 घंटे. But next बार अब हमें पता है कहाँ कैमरे रखने, लाइट्स कहाँ रखने, तो I think easier to set up. We'll improve on that definitely. Let's see. We need to buy probably more lights, but yeah. So yeah, I mean, what do you want to ask me like? मैं जनरली अभी वैसे मतलब नॉट जस्ट फॉर द पॉडकास्ट, मैं तो वो भी पूछ रहा था. ये बताओ वोकल चेन, एक बढ़िया वोकल चेन में मतलब आपके एसेंशियल प्लगइन्स क्या होंगे एक वोकल चेन में? मतलब अगर इफ एनीबडी हैज़ टू स्टार्ट गेटिंग, क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि बीट प्रोडक्शन वाली एस्पेक्ट सब समझ जाते हैं ईजिली, दैट्स फेयरली ईजियर टू डू. बट जब आप क्लाइंट प्रोजेक्ट्स उठाते हो या फिर जब आप जैसे ही यू स्टार्ट गेटिंग इनटू पेड गिग्स एंड स्टफ, तो वो एक वोकल्स वाली ऐसी होती है जिससे आपको डील करना ही पड़ता है. एंड देन दैट इज समथिंग रियली ट्रिकी जो आपको लगता है यार ये कैसे होगा, फिर आप ट्यूटोरियल देखो, ये देखो, वो देखो. राइट. आई मीन टू बी ऑनेस्ट लाइक सबसे पहले तो मैं रॉ वोकल्स को इतना जज करता हूँ बिकॉज माई वे ऑफ लिसनिंग हैज आई मीन आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग दैट नाउ एज वेल, दैट आई पुट अ लिमिटर एंड देन लिसन टू द ट्रैक. लाइक यू नो लिसन टू इट इन द सेंस कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है. एग्जैक्टली. अगर उसको हम लोग मास्टर लेवल तक लेकर जाएंगे तो उसमें क्या क्लैरिटी ऊपर आ जाएंगी. हाँ, उससे हमें ये पता चलता है कि अगर सिग्नल वर्दी भी है उतना काम करने का कि नहीं. हाँ, क्योंकि हमारे खुद के वोकल्स रिकॉर्ड करे हुए इन माइक से कभी कभार दे समटाइम्स क्लिप. Exactly. Yeah, even though they are not clipping in a way, they are like some weird effects happen. You know, you're like weird kind of artifacts come along. True. Like sometimes it's the throat of the guy. True. And that is fine there. Like हाँ बढ़िया effect लग रहा है. But बाद में जाके जब वो पूरा खुलती है ना sound. Exactly. ये मैंने अभी literally फेस करा कि मैं whistle record कर रहा था. अब मेरी आफत आ गई, whistle record ही नहीं हो रही क्योंकि मैं बजा रहा हूँ ऐसे whistle कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कुछ अजीब सा आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे नहीं सुनाई दे रहा. बेसिकली आफ्टर ईयर्स ऑफ डूइंग दिस थिंग लाइक वी फिगर्ड आउट कि साउंड एक्चुअली खुलती रहती है लाइक अंटिल यू लीव इट टिल द फाइनल एक्सटेंट ऑफ लाइक लिमिटिंग इट. और फिर तुम उस पर क्लिपिंग भी मार रहे हो, क्या कर रहे हो. देन एट दैट पॉइंट ऑफ कोर्स जब हम लिमिटर कर देते तो हम लोग मास्टरिंग में उसको कंट्रोल कर रहे हैं कायदा में, राइट. बट ऑल दैट इज कम आउट इज एक्चुअली द मेन एसेंस ऑफ रिकॉर्डिंग. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट,
I judge the hell out of the raw signal that how good it is. But if it's like कि अगर नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ मैं एग्जैक्टली अब आप जज तो कर रहे हो लेट्स से बट एक लेवल तक ही कर पाएगा बंदा, एक लेवल तक ही कर पाएगा. और ये भी चलो अगर आप जज कर रहे हो तो एक क्विक फटाफट टिप क्या होगी कि व्हाट इज द गुड व्हाट्स अ गुड वे टू रिकॉर्ड द रॉ सिग्नल. Well, the raw signal, the vocal should be balanced. It should not be too loud. That's one thing I feel कि उसका character maintain रखने के लिए, क्योंकि there's a character that gets maintained at particular gain stage levels. Definitely. Right कि किसने कितना उसको पंच करके रिकॉर्ड करा है. कभी कभार मैंने ये भी नोटिस करा है कि हायर गेन स्टेज लेवल पे कुछ कैरेक्टर्स अच्छे रहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स कम, कुछ कैरेक्टर्स बैलेंस रहने चाहिए, you know. So it's like a but like, you know, it depends on the track. But ultimately basically एक vocal chain में और vocal recording करने के टाइम पे at least vocal maintain रखो कि एक balance level maintain रहे. Don't keep changing like I'm doing here right now, like I'm moving here and I'm moving here. मतलब जब आप गा रहे हो तो you make sure you deliver a really good take जिसमें आप जितना consistent हो सकते हो, एकदम straight ऐसे levels में जितना consistent हो सकते हो उतना consistent हो जाओ. movement से भी होता है, कभी कभार बंदा अपनी पावर इतनी यूज नहीं कर रहा, उसने कम ज़्यादा कर दी ऐसे करके. So like that's why if the vocals are not good, what I recommend them if they are living around me to just come and record so I can guide them. But on the other hand, if they have like if they have good set of vocals, they are recorded on fairly nice sort of thing. So let's talk about the vocal chain. So I mostly DS the vocals first because there are a lot of sibilances that happen. Or the second thing is like, for example, we are talking in male voicings. Even in female voicings, we have the fundamental tone like the throat that we cut out. Definitely, so that's the low cut, and then you can have a steep cut over it. Maybe there's an EQ that we can show here. So do a steep cut on the vocals and like where the fundamental tone is there, and you can easily see that in the spectrum when you see the vocals. Fundamental से मतलब आपका कि जिस की में वो गा रहा है बंदा, उसका fundamental suppress कर दो. क्यों? क्योंकि when you limit that vocals further, सिर्फ लो एंड ज़्यादा सुनाई देता है और उसका कैरेक्टर कम आ जाता है, क्योंकि लो एंड बेसिकली EQ is what, like when you cut down something, another thing pops out more, right? Like in the sense of अगर लो एंड कट करेंगे हम लोग तो हाई एंड परसेप्शन ज़्यादा सुनाई परसेप्शन हो जाएगा. Exactly. So what I have this habit of cutting down the fundamental frequency of the vocals so that it has a lot of space already within the mix, and from there I gain stage and do every other thing like compression. Okay. So then from there, so this is the main foundation, like de-essing and then like using the equalizer. And then like then from there I start like processing things, like adding a bit of compressor. Sometimes I can use saturator if the vocals don't have like much warmth, let's say. If they have enough warmth, sometimes they like producer kind of already processes it, or like they use some sort of hardware gear. तो उसमें फिर ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी नेचुरली वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मतलब या फिर अगर कोई किसी ने प्रीएम्प वगैरह कुछ लगा रखा है. एग्जैक्टली. सो या de-essing, EQ, bit of compression, bit of saturation, and then little bit of soothe. Actually, before soothe, I use a limiter because I tend to use limiters on vocals. I think most of the people do. आपने मुझे भी बताया था कि rather than boosting from a compressor, आप limiter से boost करो. See, compressor usually is just cutting down the dynamics. It's like balancing out कि मैं इस level तक मस्त चलूँगा. Like I'm not going to go further. It's not Definitely, gonna. So how do you judge the compressor? Is basically if the vocals are popping out, they're always popping out. It's not like some moments that they were down. Some moments they were up. They're consistent. So basically that following a certain level of vocals is a mix of two things. One is gain staging and another is compression. So that's why we are using compression after gain staging and everything. So like I forgot to mention that gain staging is the primarily first thing that I do. आते ही clip gain काट के. तो de-essing से पहले मैं सारे जितने भी मेरे gain वो जितने भी वोकल टेक्स हो रखे हैं ना, उसको हर एक को देखता हूँ मैं, वेव फॉर्म देख के पता लग जाता है कि कितने लाउड है, कितने कम है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है परसीव करके. मतलब अगर लेट्स से इफ इट्स अ सॉफ्टर पार्ट, ऐसा नहीं उसकी वेव फॉर्म मैच कर दी. एग्जैक्टली. बट परसीव करके, परसीव लाउड मतलब सुन के उसको जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से उसको गेन स्टेज. राइट. सो मीन बिकॉज द रैपर्स दे कम बैक टू यू एंड दे से दैट लाइक ब्रो मेरे इस सेक्शन में वोकल्स कम आ रहे हैं और सेक्शन में ज़्यादा आ रहे हैं. सो एंड द इंजीनियर्स कंफ्यूज कि मैं यार मैं तो सारी कंफ्यूज रखा, मैं तो कंप्रेशन सेटिंग सही मेरी सही है सारी. एग्जैक्टली. बट द गेन स्टेज इज द मेन थिंग. लाइक बिकॉज़ पहले तो वो करना ही पड़ेगा. तुम जितना इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो उतना ही कंप्रेसर तो उस पे ऐड करेगा. ओके, तो मतलब प्रोसेस ये हो गया कि सबसे पहले अगर आपके पास आ गए वोकल्स, सबसे पहले क्लिप गेन करके गेन स्टेजिंग कर लो. मतलब कट करके एंड देन
adjust the gain, gain staging, then de-essing, then EQing, then और from EQ there में आपने बोला कि उसका वो फंडामेंटल टोन को थोड़ा सा प्रेस कर दो ताकि वो प्रेजेंस थोड़ी कम हो जाए लो एंड में. Exactly. ठीक जैसे है. vocals like balanced हो जाए, like because you don't want to just hear your low end. In the podcast you want to because there's no other music around. Right? Okay. Right. Right. So but like on the other hand, like if you're dealing with a song that is happening, you want to listen to the low end, you want to listen to the low mids. तो तुम्हारे low mids important नहीं है. Definitely. And it really depends on the singer. There is this other guy that I make music for. It's like a little bit of soft pop rock, whatnot, and he sings and he has a lot of low sound, and it is good for him. It is good for the character. उसके हाँ उनके म्यूजिक कैरेक्टर ही वो Exactly. है कि वो ऐसे ही गाएंगे. Exactly. So that is one thing that I do. तो अभी जैसे हम रील्स डालते रहते तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ना कि क्या गियर है, बढ़िया लग रहा है स्टूडियो, ये वो तो बताओ कुछ ब्रेक डाउन दो गियर का, स्टूडियो में क्या क्या गियर है. स्टूडियो में हम लोग बेसिकली जनरल के मॉनिटर्स यूज़ कर रहे हैं. जनरल के 8040B वी आर यूजिंग दैम, एंड लाइक पेंडेमिक से पहले वो लगभग लेट्स से वो 1,80,000 के थे दोनों. अब आई थिंक डेफिनेटली 2,20,000 समथिंग 220 to 40 ऐसा रखा है. वी कैन राइट द प्राइस हियर, या बट लाइक जनरल 8040B with UAD आई एम यूजिंग अ साउंड कार्ड. आई एम नॉट यूजिंग like A to D or preamp separately. We are using one of the preamps, but हमारा sound card है UAD X8P. So that is like 8 channel. That is also expensive, but like this was the one major investment because I feel हर एक स्टूडियो में एक सही साउंड कार्ड होना चाहिए जिसका A to D बढ़िया हो. डेफिनेटली. तो X8 पे आपने स्टार्टिंग में थोड़ी लिया था, हमने स्टार्टिंग में पहले मैंने Apollo Twin लिया था, Apollo Twin MK2. That is like basically single core because I just wanted to dive into the field of UAD plugins. UAD plugins तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं उसके. हाँ, UAD के लाइक कहते हैं हार्डवेयर के साथ तुम्हें प्लगइन्स आते हैं. वो अलग बात है कि आजकल एक UAD Spark भी चल गया, लाइक इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, बट दैट डजंट कवर ऑल द डोमेन्स. मे बी इट्स नाउ, बट लाइक आई डिडंट रियली एक्सप्लोर इनटू इट बिकॉज आई ऑलरेडी ओन अ UAD. Okay, तो मतलब it's basically कि आप UAD plugins use कर सकते हो ना सब्सक्रिप्शन मॉडल. हाँ, there's this thing called UAD Spark. So it's basically a bunch of plugins that you can use, like for example 1176 plugin or UAD compressor. मैं जो पूछ रहा हूँ जैसे कि UAD plugins की तो USP है कि वो उसके साथ हार्डवेयर के साथ उसके साथ चलते हैं और फिर तेज चलता है वो. एक टाइम तक थी ऑफ कोर्स, बट लाइक ऑफ कोर्स लाइक UAD एक टाइम पे आके तंग आ गया कि इनके प्लगइन्स या तो इतने सेल नहीं हो रहे या फिर दे वांट टू डाइव इनटू सच अ सर्टेन मार्केट. तो वो सेम परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे. सो बेसिकली there are plugins made by different companies, right? So there are a lot of plugins that are made by UAD and the same plugins are made by plugin lines. True. So there is a plugin called Shadow Hill mastering compressor, right? That is made by UAD as well, and that's also made by Plugin Alliance. I didn't find any major difference in it, to be honest. Like दोनों सेम काम करते हैं मेरे लिए, तो इतना कुछ नहीं पता लगा मेरे को कि ऐसा कुछ है. तो it doesn't really matter कि तुम्हें UAD के थ्रू ऐसे. वो अलग बात है कि UAD से तुम लोग को ये हो सकता है कि you don't get any latency because they have like this unison technology in it. So you can like listen to anything without any latency. You can add any other effect or a plugin that is UAD. Like for example, if you're using a UAD auto tune and you can use it without any latency. Exactly. मतलब उसमें ये perk तो है ही कि अगर आप उसके plugins natively use करते हो तो वो काफ़ी बढ़िया चलते हैं. So जब मेरे पास इतना बहुत ही बड़ा project है जैसे मैं बीट बना रहा हूँ, पहले मैं सोचता था कि नहीं मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा इसमें. I will be able to not have cut down the latency. But इसमें मैं क्या करता हूँ, बस मैं UAD control खोलता हूँ अपना और directly I listen to vocals there. But anyway, coming back to the point, like so 8040B monitors, Zenlex, then X8P का हमारे पास sound card है. हम एक preamp use of course Apollo Twin हम लोग use कर रहे हैं as a controller. As of course it gives us 2 more inputs. Then we are using the UAD again UAD. So we are using UAD 710D. That's called the preamp. Exactly. And apart from that, like हम लोग ने प्रॉपरली अकूस्टिक ट्रीटमेंट करा रखा है, लाइक अकूस्टिक्स हो रखे हैं. तो इट्स अ मेजर थिंग बिकॉज अगर तुम्हारे अकूस्टिक अच्छे नहीं है और तुमने इतने एक्सपेंसिव मॉनिटर्स ले रखे हैं तो बहुत ही बेकार साउंड करेंगे. वही अब मैं वही पूछने वाला था. जैसे अभी इधर अपने स्टूडियो के अकूस्टिक्स तो बहुत लाइक जैसे बोलेंगे ना ओवर द टॉप लेवल के है कि बहुत ही ज़्यादा you can invest even more money. People like put so much money. अब इसमें तो इतना वाली बात है ना कि जितनी चीनी डालो उतना मीठा हो जाएगा, वाली बात है. Right. ऑडियो में तो कुछ प्राइस लिमिट अपर लिमिट तो है नहीं. Definitely. इट्स जस्ट कि जैसे आपने करा रखा है तो जैसे इवन द फ्लोर
हैज समथिंग बीनीथ इट, मतलब फ्लोर भी उठा हुआ है, डिस्टेंस एग्जैक्टली, फ्लोर भी उठा हुआ है, पूरे वॉल्स कवर्ड है उससे, क्या बोलते हैं, रॉक वूल और पैनल्स और वो सब। तो जब आपने उतना उस समय क्या सोच के आपने बोला कि मैं इतना वो करूँगा, मतलब स्पेंड, आई मीन, रादर देन कि आप पैनल्स बना लेते या कुछ और रेमेडी अप्लाई कर लेते? सो आई मीन व्हेन आई वाज डाइविंग इनटू ऑडियो, आई वाज more into mastering than mixing somehow. So I was really fascinated by mastering first. बड़ी यूनिक अप्रोच है ये तो। हाँ, तो फिर मैंने जब स्टूडियो बनवाने की बात करी कि like you know I should, I mean there were our families have different, let's say, priorities, right? A lot of families, when they get money or when they have money or they are sustainable, whatever, they start buying cars, right? True. होता है. So like that didn't happen in my family. We had a decent car, so we didn't need to buy a car. So they were like, let's buy a car. So like, why do you need to buy a car? I need a place to, you know, like work. Exactly, and before pandemic, things were like significantly cheaper in terms of getting construction done. Now it's like, oh shit, I need to get a studio, so you get a loan or blah blah blah. But us date mein you could put like 4 lakh rupees and you could get a decent fucking studio. Decent क्या मतलब? काफी चर्च, like something like that. So like I nearly spent like 4 lakh rupees in just getting the acoustics and like the table and everything done. So instead of buying like a car or like something like that, we invested in a studio. Priority वाली बात है, priority. Yeah, because I was looking to, you know, do this thing like professionally, because I went around. I was searching for a lot of studios in. I'm sure a lot of guys now are searching for studios. Absolutely, हाँ, वो होता है everywhere. Like, and I was looking at कि where can I go and work in a really professional environment where there are some really good acoustics, because I came from Berkeley and Berkeley के हम काफ़ी सारे वो सुनते थे, उसमें अलग लाइक अच्छे स्टूडियोज होते थे हमारे पास सुनने के लिए. सो वही है, वी हैड गुड रेफरेंसेस, प्राइम होके आ जाते ना वहाँ से कि exactly. इतना तो चाहिए एग्जैक्टली. सो माय मदर आल्सो अंडरस्टूड दैट, लाइक बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, सो शी वाज लाइक, यू डेफिनेटली नीड अ स्पेस लाइक अ क्लिनिक ऑफ योर्स, वो ऑफिस वाला एनवायरनमेंट एक चाहिए. एग्जैक्टली, डॉक्टर म्यूजिक सॉर्ट ऑफ. सो या, सो दैट्स द थिंग. So I mean, now coming back to the point, like the idea is that like if you have good acoustics, then the speakers would work better. And what else? We have bunch of controllers. We recently invested in this really new synth. I managed to save some money to buy another synth, and like that's what we that's what audio engineers do. Like reels बनाएंगे कि बस synth buy करते रहो. But ऐसा कुछ नहीं है. We bought a really good synth, so it's a good news for our clients that we'll be using that Prophet Riv to you know, sequential series synthesizer. So I'm sure you're gonna have fun making beats with it. अभी मैं करूँगा. Coming back to another topic that I had, कि it's a process thing, I guess. आप एकदम से, let's say you're starting from zero, तो आप एकदम से ऐसे भी नहीं सोच सकते चलो मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, like including all the gear and the studio. Right. And also not everybody has that kind of expense. मतलब वही वाली बात है कि सबका अपना अपना तरीका होता है. Right. तो is there an alternative या फिर a cheaper way to get definitely there is satisfiable results कि चलो मैं स्टूडियो बना रहा हूँ, right. जैसे मैंने भी बनाया, like even if I have my home studio setup, तो rather than like getting the whole room covered with rock wool, मैंने panels बना रखे. Yeah, again coming back to the priorities, my priority as a engineer, because I had a networking of people around me from where I studied. So I wanted to portray as I am the person that you connect with for like mix mastering, like professional ones. Got it. So I needed to portray that like I have a really good space. Understood. So my priorities was like to get a really good sounding room, because I need to mix master that, not just produce. But if you're a producer and if you want like to sound good, and if you want to train your ears around a really good setup, and you want to invest like let's say maybe 80,000 1 lakh in acoustics, so I think that's a good deal, because you can, I mean if you ask me कि acoustics सस्ते कैसे करा जा सकता है, so उस केस में basically हम लोग wooden panels बनवा लें, जिसमें एक wooden खाने के अंदर हम लोग रॉक वूल डाल सकते हैं. एंड लाइक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डन दैट, कि उन्होंने पीछे बहुत ही अच्छी सी आर्ट और क्लोथिंग पे बहुत अच्छी सी आर्ट के साथ पीछे ऊपर बेस स्ट्रैप्स, you know, on the diagonal bass straps, whatever you call it, like on the top. Yeah. So you cover pretty much every other area which has reflections, and you try to also have like a space which doesn't have any opening. उसके साथ हो जाता है, like you train your ears around it. Definitely. मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी कमरा बनाओगे और वो परफेक्ट तो नहीं होगा. Exactly. You have to train your ears according to your room. Yeah. But हाँ, panels में मतलब वही वाली बात है कि
मेक पैनल्स DIY तो हो ही जाते हैं, मैंने खुद भी DIY कर रखे हैं. देन एक बार जब मैंने DIY कर लिए थे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, फिर मैंने फिगर आउट करा कि हाँ अब मैं बनवा भी सकता हूँ, बिकॉज आई हैड द एक्सपीरियंस. तो so what's your home setup though, like what kind of like gears do you have like in general? मेरा मतलब यूजुअल अपना घर पे, because I am production center. Yeah, you're more production center. Let's let everyone know that you are more into production, you're more into making beats, you're more into making content. So exactly, so your setup would be around what you do, right? Exactly. वो होता ही है ना. तो अब मेरा सेटअप मतलब जो मेरा ओरिजिनली सेटअप था देहरादून में, दैट वाज वेरी सेंट्रिक अराउंड कि मेरे को स्पेस चाहिए था टू शूट एंड स्टफ. तो कंटेंट रिलेटेड, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज इनटू मेकिंग वीडियोस और ये वो ऐसा करो ये बनाएंगे. तो वो बट इवन दो नाउ आई हैव शिफ्टेड, मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी सी वो रहती कि द स्टूडियो शुड बी एस्थेटिकली गुड लुकिंग और कोई भी आए तो यार क्या बढ़िया वाइब है, मजा सा आ गया ऐसे कोई भी क्या मतलब व्हेन वी सिट ऑन मेकिंग अ बीट वी वांट टू फील लाइक रियली गुड, राइट? ट्रू. तो मतलब मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी रहती कि एस्थेटिक्स एकदम टॉप नॉच रहे, बढ़िया, मेरे को मजा आए. राइट. तो सब वहाँ पे ऐसे वो खुशबू लगा के सब बढ़िया रहना चाहिए. बाकी मैं विप्रो वाली लाइट्स कलर वलर करके सब चीज़ें, तो ये तो खैर एस्थेटिक्स वाली बात हो गई. बट द गियर आई हैव, मेरा एक तो लैपटॉप है मैकबुक, बिकॉज वो लैपटॉप वाला दूसरा डिस्कशन हो जाएगा ऑल टुगेदर. बट लाइक इन टर्म्स ऑफ लेट्स से गियर सिस्टम तो अलग बात है. गेट अ बेसिक लैपटॉप. उसके अलावा मेरे साउंड कार्ड बेसिक है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, वो ले रखा है मैंने. इट्स ID4 ऑडियंट का. So like that's a pretty standard entry level. Like Audient is a really good company to entry level. Definitely, it's one of the things one of the sound cards I recommend because they have. अब जैसे Scarlett बहुत पुराना हो गया. Like UAD वाला Volt आ गया अब तो. अब now I think I could recommend Volt to people. Exactly. Yeah. क्योंकि वो UAD भी है. Definitely. So you get some punch out of it. If you have a budget between 10 to 30K, you could go in Volt or Audient. Audient, हाँ. Yeah, Volt better because they look good as well somehow, and they give you a little bit of extra add-ons. You get into that UAD universe वाली बात हो जाती है. Exactly. You get used to some. You get add-ons like 1176, like warmth, blah blah blah. But if you're going above 30 and if you want to stay in the range of 30, you could go for SSL as well. SSL भी 25-30 का 30 का आ रहा है. But I think I'm not sure comparison wise के sound किसकी better है. But SSL slightly better, but then SSL also has a really good industry reputation. उनके plus you get plugins with that as well. Like you know the वो SSL का थोड़ा visual aesthetic वैसा है, काफी rugged और machine like होता है ना, जैसे हाँ ये स्टूडियो में कुछ machine पड़ी है. Right, exactly. It's not very good looking, but sounds good. वो वाली चीज़ है. But I think अगर 30K से और ज़्यादा spend कर रहे हो तो between गोइंग फॉर सीधा अपोलो जो सीधा 80K 1 लाख हो गया, 100K वाली रेंज हो गई, आई थिंक बेबी फेस RME ले सकते हैं. डेफिनेटली बेबी फेस इज ग्रेट. लाइक RME एनी साउंड कार्ड RME ऑसम. तो उसका बेबी फेस आई गेस अराउंड 60-70K है, बट देन फायर फेस और महंगा है, बट बेबी फेस तो सस्ता आता है. आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर लाइक फ्रॉम our friends using it, you know. How can we invest and use, like we are not like a channel where we get investments on the people at the moment कि भाई हमारा साउंड कार्ड यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो. बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ करा है, जितने भी मेरे सर्कल में लोगों ने यूज़ करा है, दैट्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस आई हैव बीन टेलिंग. बिकॉज स्कारलेट तो ऐसा है कि बहुत पुराना है. इट्स अ एंट्री लेवल व्हाटएवर, एंट्री लेवल कब से एंट्री लेवल ही है वो. बट लोगों ने बहुत ही फाड़ म्यूजिक बना रखा है उससे. लाइक अल्टीमेटली टैलेंट भी बहुत मैटर करता है. But on the other hand, if you are like talking about you know a good sound card, if you want like a new good sound card, let's say current generation, that's what we look for when we going to buy some new thing. That's a current generation, because even while buying synths and everything, you need to know कि firmware उसका आ रहा है नहीं आ रहा है, blah blah blah. But it just feels better to buy a new. और वो भी चीज़ है कि कुछ चीज़ें जैसे अब वाले साउंड कार्ड्स में like the peripherals and the connectivities through C type. Right. तो वो चीज़ आपको चाहिए ना. आप कब तक वो मोटा USB पिन लगाते रहोगे. हाँ, वही compatibility होनी चाहिए. बहुत चीज़ें हो गई वो तो. Like how fast it is reacting to the software that you have. Exactly, वो भी like Volt, maybe like with Volt they might be giving like UAD plugins as well. So these things are an add-on as well. So it's not just the it's not just the A to D conversion and the preamp. It is also about the looks and how many softwares you get with it. So I think SSL and UAD allows that. सारी चीजें मिला. तो किसी को खरीदना है साउंड कार्ड तो कोई सस्ते इसी रेंज में, so they need to look at these factors. Like आपको plugins चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर बिल्कुल जैसे अगर plugins वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए तो Audient ले लो. But हाँ मतलब हाँ, if you're strict on budget, if strict on budget, like I think you would go with Volt का Volt 1 और
something in ID4 ID4 या फिर ID वो भी आता है, क्या बोलते हैं, उससे नीचे 14 ID14, okay, वो जो थोड़ा बड़ा वाला है. there you go. हाँ. So yeah, that's it about the gear, and that's what we use for acoustics. But yeah, at the end, like जिसके बारे में बोल रहा था कि जो भी हमारा सेटअप है उससे अगर हम लोग अपने ईयर्स को इतना सही ट्रेन कर लेना कि मेरे को पता है कि इस रूम में क्या हो रहा है, एंड एवरीवेयर एल्स in his earphones and in his car, how that is sounding. So if you can, let's say train your ears every day or every other day for 6 months, you don't need to change a lot of things, but just make sure that you are sitting right. अपना वही बात ये है कि अपने ऐसा तुम्हारा भी नहीं स्पीकर टेढ़ा हो गया तो उसको ऐसा नहीं, बाथरूम में बैठ के बोलो मैं यहाँ ट्रेनिंग कर लूँगा. Exactly, that won't work. नहीं वो तो like make a basic setup. There are softwares which would allow you to, you know, read the spectrum of your room, like, you know, to calibrate your just room. like sonar works. Exactly. उससे थोड़ा cheaper. थोड़े cheaper. You don't necessarily need those specific mics sometimes to calibrate or how the room is working. SonarWorks के कंपनी के अलावा भी और भी बेसिक वाले आते हैं. Definitely it won't give you the it won't give you that many readings as SonarWorks, definitely, but like काम हो जाता है. हाँ, तो वही कमिंग बैक टू जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यू ट्रेन योर ईयर्स बेसिकली, और इतना आपको ज़्यादा वो भी सोचने की जरूरत नहीं कि एकदम सब कुछ हर चीज़ पिच परफेक्ट हो और ये हो रहा है वो हो रहा है. परफेक्ट स्टूडियो तो कोई सा भी नहीं होता. कोई भी नहीं होता. आई मीन एट द एंड तुम्हें अपना आपकी कहानी ट्रेन करना है कि किस तरह से तुम्हारा एट अ पॉइंट लाइक व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग मिक्सेस, आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो कर रहे हो, आपको पता चल जाता है कि ये ऐसा रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है तो गाड़ी में ऐसा करेगा, फ़ोन में ऐसा सुनेगा, वो सब. बिल्कुल. एंड देन यू टेक रेफरेंसेस, तो समझ में आ ही जाता है. वेल यार, आई मीन it's confusing because everyone have their own way of learning, and that's why, you know, I mean, few days back we came up with this mentorship program and all that where if people are really confused with what's happening in their life, if they're really confused and if they're in this intermediate segment of, okay, we have learned a production and we still don't know what's happening, how to arrange, which is very common. Yeah, how to आपने technicalities तो सीख ली, but तुमने ट्रेनिंग नहीं करी ना यार, वो रोज बैठ के अप्लाई तो करा ही नहीं आपने, and फिर वो टाटा वाइब हो जाता तो they can't connect with those people and ask them कि मेरा mix कैसा है, and they just keep asking their friends or people who don't have any idea in music. True. अपने mom dad से, you know, so I mean emotionally they will be of course like supporting you. Yeah, definitely, but they cannot tell you about the technicalities कि mix अच्छा है या नहीं है, that is at the end of the day आपको कभी ना कभी तो वो चाहिए ना चीज़. Exactly. Even if parents are pretty strict and like they know what what they're saying in music, ultimately you need a person to motivate you. So mentors are not just for that. So you know that's really important. So because a lot of people don't have the liberty of having the correct room or how to hear it or how to figure it out, because there are a lot of complexities. Of course you struggle for many years, you spend a lot of time and then you figure it out. But what I'm trying to do is just like to gather these bunch of people that we can train if they need training. Otherwise they could just like take a class or something like that and speak to us, you know, like how do we tackle this issue, like what kind of room do you have, blah blah blah. So basically you're giving your distilled experience exactly to them. Yeah, so उनको किसी भी form, shape or form में requirement हो उसकी. Exactly. They need to learn some production techniques, right, or they need some advice, right, I mean in their career के advice और आगे क्या कर सकते हैं, general मतलब basically from your experience. It's like, not just that, it is mostly production specific. So if they're like, I mean we're always in our services trying to understand who we are working with, what kind of vision they have, and what kind of like what kind of sound they're looking for. So everything is around that, because nobody talks about it. Everyone is like, okay, what do you want to do, okay, how much, what kind of gear do you have, blah blah blah, but nobody's really talking about the musical aspect of things. So the program is all around that, like what kind of music do you want to do, and around that how can I help you, so because we are making different kind of versatile kind of music, we're making synthwave, we're making synthwave, hip hop, UK drill, afro yeah sometimes and like many other things, including progressive house, which I make personally, and you make different kind of music as well. So when we have so much information to give about arrangements, what we do, at least till a aspect of how advanced we are in our skills, that's a major help for a lot of people, because everyone is confused of how to start a track, how to end a track, and how to basically, and we are teaching basically how to manage yourself, how to manage your workflow, right? There are many misinformation in this field, right? Ki
people are thinking that if they went out to study music, they will be successful in music production. Like even beginners know, because beginners think it that way कि हमारे पे पैसे नहीं है तो हम कर नहीं पा रहे. ऐसा कुछ नहीं है. True. So you know, that is all these informations they can take from us, you know, like just by speaking to us. That's why this podcast is about that as well, right? कि वो लोग like ये सोच के बैठे हैं कि नहीं यार बाहर मस्त म्यूजिक चल रहा है and like there exactly, like if I just play my music there it will happen. No, actually not, because there's so much competition there. True. And sometimes in a lot of places they're not even that kind of music. वो बहुत ही पुराना म्यूजिक है और कुछ कंट्रीज में you would be surprised to know how they work, how their economy works. Exactly. And how lucky we are that we can make money through music actually here. I'm not talking about Middle East, I'm talking about Europe. If the people are like, you know, कि नहीं Middle East की बात कर रहा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं. Europe में ही many countries you can't really find a good job, right? And you need to have a freelance work. If you have a freelance work, definitely you can live anywhere, I feel. That suppose that you don't need to be physically interacting with your clients. True. मतलब तो वही basically the mentorship and the podcasting जो हम परसों डिस्कस कर ही रहे थे was उसका मतलब कोर ये था कि very it aligns with what we are already doing, you know? Exactly. Like, मतलब एक बारी बात तो करके देख भाई से, वो हम इसका हंसते हम कॉइन कर रहे थे कि भाई से बात तो तू बात तो करके देख भाई से, like so much information मिल जाएगी तेरे को, like कि हमसे बात करने में you will be so informed because our everyday is like this. That's not like a boasting thing या फिर कुछ भी कि हमसे बात करके ऐसा नहीं, it's not a boasting thing. It's definitely like a thing where because we are producers and we just talk like this, right? We talk about this कि हाँ ये क्या कर रहे हो, beat बनाई, blah blah blah, right? Exactly. When we're speaking on phone with other producer friends, we are just talking about this. Okay, so you made this beat, can you listen to it? Also, we are in that sense not like judgy. We are just like really supporting each other, right? In that sense, not supporting, but like enjoying each other's music, right? Exactly. So that's why I feel like there is nowhere that we find people talking about on podcasts. Not just that, I feel it's fun for us to see how it goes. Let's say, like, I mean, people ask any questions to us by the end of this podcast, we can make it happen, you know. हाँ, मतलब हम अगर let's say in the comments हमें कुछ questions मिलते हैं, right, तो हम उनको next podcast में discuss कर सकते हैं. Definitely. Because ऐसा हम कोई fixed structure तो रख नहीं रहे conversation का. बिल्कुल नहीं रख रहे. Some topics that we want to discuss. Anything basically comes up and everything is important to cover. Sometimes we can always deviate from the topic, but yeah. So guys, I mean, if you have any questions for us in this podcast that we can cover, you know, definitely would love to answer, because I'm sure there are many things yet to be discussed and we would love to make it happen here, right? For sure. So करते हैं भाई podcast, ये तो बढ़िया लग रहा है. For sure. है ना? बढ़िया, काफ़ी बढ़िया vibe होगी. काफ़ी बढ़िया vibe होगी. चलो guys, thank you so much. Okay. Peace. Peace out.